I kept honor of the saffron gold. Namaste ma'am, namaste, namaste. I am Dr. Manushree Veshpati, legal advisor. तालियां माननीय मंत्री जी के लिए एडवाइजर DST तथा रिस्पेक्टेड श्री राजेश कुमार पाठक IP एंड TAFS सेक्रेटरी TTB, सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पैर अपनी मिट्टी अपनी का यही वो दिन था जब भारत ने पोखरण टेस्ट के द्वारा स्वाभिमान की गर्जना की थी, सारे विश्व को सुनाई थी। आज भारत आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास अपने मस्तक पर सजाए वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति से जगमगा रहा है। इसी स्वाभिमान को नए नए आसमान दे रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम्स को कमर्शलाइज करके टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को खास पहचान भी दे रहा है और प्रोत्साहन की मुस्कान भी दे रहा है। अतिथि सत्कार जड़ों से ही जुड़ने का हमारा संस्कार है। हमारा निवेदन है डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर जी आपसे कि कृपया माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करें, उन्हें गुलदस्ता भेंट करके। दीप ज्योति नमोस्तुते। भारतीय संस्कृति का अर्थ है शांत से अनंत की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। विजित किसान लिखो, धरती से लेकर अंबर तक जय करता विज्ञान लिखो, सांसों की धड़कन धड़कन पर अपना हिंदुस्तान लिखो, अपना हिंदुस्तान लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हम निवेदन करते हैं रिस्पेक्टेड श्री राजेश कुमार पाठक आपसे, सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, की कृपया स्वागत संबोधन दें। मंच पर उपस्थित हमारे बीच भारत सरकार माननीय केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित चेयरमैन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी DST चंद्रशेखर सर, अखिलेश गुप्ता जी, हमारे बोर्ड मेंबर गोयल जी, विनीसा मैडम, गुप्ता जी एंड ऑल गणमान्य व्यक्ति, और जो हमारे प्रतिभागी आज यह अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं, और मीडिया के सभी बंधु, आप सबका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और DST परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, और जो हमारे विजेता हैं उसका हार्दिक अभिनंदन, और हम सब आपको हृदय से आज के दिन के लिए बधाई भी देते हैं। जैसा कि ज्ञात है, आज का दिन हम 11 मई 1998 में जब पोखरण ब्लास्ट हुआ था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। इसके साथ ही दो और डेवलपमेंट 11 मई से जुड़ा हुआ है। जो हमारा फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट था हंसा 3 और त्रिशूल मिसाइल, उसका भी परीक्षण आज के दिन ही हुआ था, और सरकार ने यह निर्णय लिया कि 11 मई को हम लोग टेक्नोलॉजी डे मनाएंगे। और
पहला जो टेक्नोलॉजी डे फंक्शन था 1999 में, उस पे अवार्ड भी दिया था द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हम सब के लिए ये दिन का एक विशेष महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड में जुड़े सभी लोगों के लिए, लेकिन हमारा मानना इससे कुछ ज़्यादा है। इस डे का सिग्निफिकेंस जो हमारे लाइफ में है, ये वो दिन था जब आप याद करें 1997-98 पॉलिटिकल टर्मोइल थी, और उसके बीच में ये भारत सरकार का एक बोल्ड निर्णय लेना कि हम इस टेस्ट को, न्यूक्लियर टेस्ट को करेंगे, और उसकी जो गोपनीयता थी वो इस लेवल की मेंटेन थी कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुआ। जब हमने दुनिया को बताया तो दुनिया अचंभित रह गई। अपने आप में वो निर्णय लेना कि हम ये काम करेंगे, ये उस नए भारत का शुरुआत था, जो मेरा मानना है कि आज जो हमारी सोच है इसके बीज कहीं ना कहीं इस दिन में ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे वो रहे, प्रेसिडेंट भी रहे हैं और हमारे बोर्ड मेंबर भी थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया था। और हमें आज इस मौके पे एक छोटी सी डायलॉग है, यदि कोई हिंदी मूवी देखते हो, एक राजकुमार हमारे एज में उनका जो संवाद अदायगी था, उनका एक विशेष टोन था जिसके वो संवाद डायलॉग बोलते थे। उनका एक मूवी थी बुलंदी, उसमें एक डायलॉग था जो मुझे याद है और हम लोगों ने टीनेज में देखा था। जो वो कह गए कि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। और ये डायलॉग आज की तारीख में जब हम ये कह रहे हैं, आंखों में आंख मिला करके, जो उस समय जो 5 न्यूक्लियर पावर थे जो हमें कह रहे थे कि आप टेस्ट नहीं करेंगे, उस परिस्थिति में, और आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि उन सभी देशों को हम ये कहते हैं कि साहब, जब यूक्रेन का युद्ध हुआ या अभी चल रहा है, जब हमें कुछ सलाह दी जाती है तो मैं उनके आंखों में आंख डाल करके ये कह पाता हूँ कि नहीं, आप जो एक महीने में खरीद रहा हूँ भारत, आप एक दिन में खरीद रहे हो, या अमेरिका को मैं कह पाता हूँ। ये इसके बीच कहीं ना कहीं ये नींव इसी दिन रखी गई थी जो आत्मविश्वास था, और इसी आत्मविश्वास को और ये सोच का हौसला जो है, उस पे हम सभी आज जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाना है, इसकी कहीं न कहीं बीज हम उसी दिन डाले थे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड माननीय मंत्री जी की मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपने सोच और अप्रोच दोनों पे काम करना शुरू किया है। और जब आप देखें, इस साल जब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डे अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मंगाया तो एक रिकॉर्ड 300 के करीब नॉमिनेशन हमें मिले, और सिलेक्शन करने में भी हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें किसे अवार्ड दें, किसे न दें। मैं उन सभी प्रतिभागियों का, जो आज तो हम अवार्ड करीब 10 दे पा रहे हैं इसमें, उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इसमें भाग लिया, उनका तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। जीतना ही लक्ष्य नहीं, आपने भाग लिया, ये बहुत बड़ी बात है। हम अब आपके पास आ रहे हैं, जैसे अभी हमने पटना में प्रोग्राम किया या KIT में प्रोग्राम किया, तो वहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी बड़े संख्या में स्टार्टअप वगैरह आने शुरू हुए हैं और हम उनके पास जा रहे हैं। और अदर मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी हमारी एंगेजमेंट है। होप है कि हम आगे आप अपने माध्यम से आप सब तक पहुंच पाएंगे, और इस टेक्नोलॉजी डे के माध्यम से जो भी जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर और साइंस में, उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और हम बहुत सारी बातें आज मैं करना चाहता था, जैसे एक दो छोटा मैं एग्जांपल लूँगा, समय अभाव की कमी है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आज लास्ट मंडे एक बैंगलोर का यूनिकॉर्न बना है, 100th यूनिकॉर्न इन इंडिया।
ये मंडे की बात है, आज हिंदुस्तान के टाइम्स में निकला भी है। और लास्ट 2 साल में, पिछले वर्ष 46 थे, इस बार अभी तक 14 हो गए हैं, को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ये भी यूनिकॉर्न के दिशा में आगे बढ़े, हमारा ये मानना है। दूसरा है, हमें उन सभी को, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमने अपने सोच में ये परिवर्तन किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल, जो हमारे अभी टेलीकॉम सेक्टर में भी 1-2 लोगों को अवार्ड मिला है। हमने टीईसी, हमारे एक जनरल वो बनाता है, जिसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन, वहाँ भी बड़े बड़े लोगों की बात होती है। वो आपके सिस्को आएगा या जो भी बड़े लोग आएंगे, हमने कहा भाई आप हमारे स्टार्टअप को भी सुनिए, उनसे हमें लेटर मिलने वाली है। आजकल में हम अपने यहाँ जो भी टेलीकॉम के रिलेटेड में उनको देने वाला हूँ, जो स्टार्टअप है, आप जाइए, आप उनको बताइए कि, और आप एटलीस्ट आपकी बात रखी जाएगी। तो मार्केटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी भी हम आपको सहयोग करेंगे, और उसमें भी हमने अभी काम करना शुरू किया है। एक और विशेष प्रयास जो हमने इस बार किया, जिसके माध्यम से हमें आशा है कि हम बहुत सारे ऐसे सपने को साकार करने में कामयाब होंगे, जो माननीय मंत्री जी के ही निर्देशानुसार और आदेशानुसार ये हुआ है कि हम पहली बार इंडस्ट्री के साथ मिलकर के 50-50 पार्टनरशिप पे एक हम कॉर्पस फंड, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड बना रहे हैं। हमारे साथ भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आए हैं। इनकी कंपनी ने हमारे साथ आगे आए हैं और कहा कि ये 200 करोड़ लगा रहे हैं, 200 करोड़ हम भी लगा रहे हैं, करीब 400 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं। इसमें एक क्रॉस सेक्टर हम स्टार्टअप को रिलैक्स टर्म्स एंड कंडीशन पे फंड करने जा रहे हैं। तो आगे भी आप लोगों के साथ काफ़ी संख्या में हम इसको फंड करेंगे, कि ऐसा इसको रिलैक्स कंडीशन में करेंगे। डायलॉग था, जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना और जमाने से हम नहीं। सीढ़ियों से तो उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें खुद रास्ता बनाना है। हमें आसमान की बुलंदियों तक जाना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। और अगली जब नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे हम लोग इकट्ठे हों, ऐसे कुछ नायाब हीरे जिसको हम तलाश कर तराश ले और हमारे बीच उपस्थित हो। और नेक्स्ट ईयर हम 25वां सालगिरह मनाएंगे 1998 पोखरण ब्लास्ट का, और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, जिसका अभी से हम तैयारी करना शुरू करेंगे इस पूरे इकोसिस्टम में। धन्यवाद। कौन कहता है कि सपने कभी देश का राष्ट्रपति ना बनता, ना तो कोई वैज्ञानिक एक दिन भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाने की कल्पना करता, ना ही कोई दूरदर्शी सोच भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना पाती, और ना ही कोई लड़की घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर पद्मश्री से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला वैज्ञानिक बन पाती। कहां से आते हैं ये सपने? कौन देखता है इन्हें? ना तो ये अमीर गरीब में फर्क करते हैं, और ना ही क्षेत्र और रंग में। ये परखते हैं तो बस इन्हें देखने वालों के जज्बे को, उनके हार न मानने वाले जुनून को, और एक अडिग विश्वास को कि एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए या ना होने के बीच है। गौर से देखें तो असंभव में भी संभव ही नजर आएगा। पिछले 25 सालों से बस यही तो करते आए हैं हम। आपके सपनों को सार्थक करके उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया है हमने। एग्रीकल्चर से लेकर एरोस्पेस तक, जमीन से आसमां के सफर में हर कदम पर साथ निभाया है हमने। आपके सपनों को बस पंख ही तो दिए हैं हमने। आज कुछ ऐसे ही सपनों के सच होने का जश्न मना रहे हैं हम, यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जहां सपने सच होते हैं। आज प्रगति की इसी विजय गाथा में 2 नए अध्याय आज जुड़ने जा रहे हैं। आज पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च होने जा रहा है वो है क्वांटम सिक्योरिटी क्षेत्र का प्रोडक्ट। माननीय मंत्री जी से हमारी विनम्र अनुरोध, लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा TDB के द्वारा सपोर्ट से डेवलप किया गया है।
इसके लॉन्च के साथ ही एक छोटी सी फिल्म भी चलाई जाएगी। When you send encrypted data over the internet, it begs to question, is it really safe? What if it's being copied without your knowledge? Can you detect or prevent it from being copied? Fortunately, you can. Introducing Armos, your gateway to securing a higher business posture. ये पहला इंडियन लीनियर एक्सेलरेटर है विद FDA क्लियरेंस एंड CE सर्टिफिकेशन। इसके बाद एक छोटी सी फिल्म आपकी जानकारी के लिए चलाई जाएगी। टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा TDB के पार्ट सपोर्ट से डेवलप किया गया है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव आत्मनिर्भरता के गर्व को मानो एक पर्व की तरह मना रहा हो। आज उन नायाब और कामयाब अचीवर्स को पुरस्कृत किया जाएगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गर्व को शिखर पर ले जा रहे हैं। सबसे पहले TDB अवार्ड्स 2022 नेशनल अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे स्वदेशी तकनीक के सफलतापूर्वक कमर्शलाइजेशन के लिए। इसमें औद्योगिक कंसर्न को दिया जाएगा, एक सब कैटेगरी है, और एंटरप्राइजेस को दिया जाएगा, दूसरी सब कैटेगरी है। और दूसरा जो पुरस्कार है ऐसी स्वदेशी तकनीक के लिए है, उसके विकास के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स के कमर्शलाइजेशन। राजीव छेपर, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा पुरस्कार इसी में ही मिल रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र को फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ ऑटोमैक्स टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्जन ऑफ क्रेडिट C4 स्ट्रीम टू हाई ऑक्टेन गैसोलीन। पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर आ रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन साव और डॉक्टर SSV रामकुमार। SSV रामकुमार is Director R&D. Dr. Madhusudan is ED Refining Technology. In the same category of National Awards for MSME, जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना को फॉर कमर्शलाइजिंग द इंडिजिनस प्रोसेस फॉर्जिंग एंड मशीनिंग द टर्बाइन ब्लेड यूजिंग ओन डिजाइन फॉर्जिंग डाइज टूलिंग एंड फिक्सचर्स। इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए श्री कार्तिक जोगदार और श्री विष्णु मालवानी मंच पर उपस्थित हैं। तालियों से इनकी हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि तालियां शुभकामनाएं होती हैं जो इनके साथ हमेशा रहेंगी। Under the second category of TDB Award for Technology Startups, इस अवार्ड के हकदार रहे अजूका लैब्स प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका फॉर डेवलपमेंट ऑफ RNA रैपर एड्रेसिंग सैंपल कलेक्शन रैपिड टेस्टिंग एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर COVID-19। इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे डॉक्टर फातिमा बेंजी और श्री एलेक्स डी पॉल। अगले हकदार रहे क्यूरू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका फॉर डेवलपमेंट ऑफ आरमोस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रोपोज क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। श्री सुनील कुमार गुप्ता, आपसे निवेदन है मंच पर पधारें।
Prayasa 3D Inventions Private Limited, Pune, Maharashtra, for development of rupture-free 3D printed breast implants and prosthesis. इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए निवेदन करती हूँ मिस शिल्पी सेन एंड विकास गर्ग को। Zoid Labs India Private Limited, Kerala, for development of electronics assembly robot, vision assisted AL powered robot for accurate and affordable electronics assembly। इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री अजीत नारायणन और डॉक्टर के.सी. उन्नीकृष्णन। इसके लिए मिस्टर चांदना, श्री पवन कुमार चांदना और श्री नागा भारत डेका, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। मल्लिपात्रा न्यूट्रास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटका, for development of artificial cultivation and formulations of product comprising costly and endangered mushroom and injective therapy for disorders related to kidney, liver cancer and other viral infections। इसके लिए मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर मौसमी मंडल और श्रीमती दीपा एच.ए। सभी अवार्डीज भी इकट्ठे होंगे इसके बाद फोटो के लिए। HTTP Scart Technologies Private Limited, Rajasthan, for development of White Jungle, a unified cyber security platform that enables organizations to manage and secure their entire network through a single window। To receive the award, I request Shri Kamlesh Gupta to please come up onto the stage and receive the award। इसके बाद सभी जो नेशनल अवार्ड विनर्स से एक बार मंच पर आ जाए तो उनका एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी के लिए आगे बढ़ेंगे, पर ये कार्रवाई को आप जल्दी ही कीजिएगा क्योंकि अब हमारा अगला अवार्ड जो है वो विमेन अवार्ड है। तो सिर्फ जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो पहले आएंगे, इसके बाद विमेन का जो है हम अवार्ड अनाउंस करेंगे, उसके बाद वो मंच पर आएंगी, अवार्ड लेंगी और उसके बाद में उस सेक्शन के बाद में फोटो सेशन। महिलाओं ने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहराया है। आजाद 45 इयर्स और अबव के लिए है और यंग के लिए बिलो 45 इयर्स। तो अब हम पहले अवार्ड की घोषणा करने जा रहे हैं। फर्स्ट अवार्ड इज टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड प्रोसेस केमिस्ट्री। बहुत बहुत बधाई आपको। ये महिलाएं हैं जो कदम से कदम मिलाकर, तो नहीं कहूँगी 2 कदम आगे ही चल रही हैं। Second award carries, and for this I request Dr. Sujata Srinivasan, जो कि आज आ नहीं पाई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सुजाता के बाद the third prize goes to Dr. Ritu Trivedi। आपसे निवेदन है मंच पर पधारें। Principal Scientist, Endocrinology Division, CSIR Central Drug Research Institute, Lucknow। This carries a trophy and a certificate। Under the same category, National Women Scientist Award for Excellence in Translational Research, यंग की कैटेगरी में जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये 2 अवार्ड हैं। तो ये दिया जा रहा है डॉक्टर दिव्या अग्रवाल को, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट है CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, चंडीगढ़। आपसे निवेदन है मंच पर पधारें। और सेकेंड अवार्ड जो है वो डॉक्टर ए हेप्सिबा किरण मई को दिया जा रहा है, लेकिन उनके बिहाफ पर श्री पीसी अंडर द सेकेंड कैटेगरी नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड सीनियर के लिए अवार्ड जा रहा है। पहला ये जा रहा है डॉक्टर लिली वर्मा को, फाउंडर एंड मेडिकल डायरेक्टर मेसर्स लाइफ केयर इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। सेकेंड अवार्ड के लिए तैयार रहे डॉक्टर विभाग प्रगाटी, फाउंडर मेसर्स स्वजल वाटर, हरियाणा।
तालियों की बौछारें होती रहनी चाहिए। सेकंड प्राइज के लिए यहाँ पर डॉक्टर विभा त्रिपाठी और अब तैयार रहे थर्ड अवार्ड के लिए अनुराधा मोदी। डॉक्टर षणमुख प्रिया जो है वो रिसीव कर रही हैं अवार्ड को उनके बिहाफ पे। शी इज मिसेस प्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की फाउंडर हैं। अंडर द सेम कैटेगरी नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड यंग के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है डॉक्टर अनुसुया रॉय को। शी इज फाउंडर सीईओ मेसेस नैनोसेव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा। सेकंड प्राइज के लिए तैयार रहे डॉक्टर सरिता अहलावत। डॉक्टर सरिता अहलावत तैयार रहेंगी सेकंड अवार्ड के लिए। इसके पहले डॉक्टर अनुसुया रॉय। बहुत बहुत बधाई। और को फाउंडर ड्रोन्स का जो आपने शो देखा होगा मीटिंग रिट्रीट में, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। एक बार हम चाहते हैं जो हमारी इधर देखिए, बोले तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल मेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगला अवार्ड है नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड बिजनेस इंक्यूबेटर अवार्ड और दूसरा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर अवार्ड। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर अवार्ड 2019 के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर National Award for Emerging Technology Business Incubator for year 2019 is given to Indigrams Lab Foundation, New Delhi. और अवार्ड जो है will be received by Dr. Ram Narayan Bhatta, CEO Indigram Labs Foundation, New Delhi. ये तालियां आपकी शुभकामनाएं हैं, ये इन तक पहुंचनी चाहिए और इनके साथ साथ जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर अवार्ड 2020 ये जाता है गुजरात फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस, आई क्रिएट एंड कृष्णा पैक इंक्यूबेशन सोसाइटी गाजियाबाद को। तो सबसे पहले गुजरात की तरफ से निवेदन करती हूँ श्री अनुपम जलोटे से ये मंच पर आए और उसके बाद तैयार रहे श्री सौरभ कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर। सौरभ कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर। रिसर्च इनोवेशन इंक्यूबेशन डिजाइन लेबोरेटरी फाउंडेशन रीजन मुंबई को दिया जा रहा है नेशनल अवार्ड फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर फॉर ईयर 2020 अवार्ड। इसके लिए मंच पर श्री गौरंग शेट्टी, सीईओ रीजन मुंबई उपस्थित हैं। और अभी इस बार फोटो सेशन के लिए सभी अवार्डीज जो है प्लीज मंच पर पधारे। इसके लिए जो थर्ड हमने अवार्ड अनाउंस किए हैं उसके लिए कृपया मंच पर पधारे हमारे फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। को अच्छी तरह से जानकारी है और हम हृदय से आभारी हैं इनके योगदान के लिए।
इधर देखिए आगे नहीं थोड़ा पीछे हो। आप आगे आप इधर ही आइए। एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल माननीय मंत्री जी की कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें। श्रीमान गाइडेंस, श्रीमान गाइडेंस। दूसरी पुस्तक है माननीय साइंटिफिक सोशल एसएसआर गाइडलाइंस इसे कहते हैं, प्रिपेयर बाय डीएसटी। तो आपसे निवेदन है इसका भी विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। वैज्ञानिक ज्ञान का ट्रांसफर और इसका समाज को लाभ, इसका विश्वास, पार्टनरशिप और जिम्मेदारी का ये जो मसला है, इसमें सोशल गोल्स हासिल होते हैं। इससे गवर्नमेंट एजेंसीज को, एनजीओज को, एकेडमिया को, रिसर्चर्स को, सभी को बहुत लाभ पहुंचेगा। बहुत बहुत Honorable Minister Dr. Jitendra Singh ji, colleagues on the dais, friends, awardees, ladies and gentlemen. It's been a great honor to be part of this event. On behalf of DST and Technology Development Board, we heartily congratulate all the awardees who have made us proud today. As the Secretary mentioned, those who have not won the awards, not that the products were not good, but the jury had to choose only few awardees, and my congratulations to all the people who contested in this award. I also take this opportunity to greet all of you on this May 11th, which happens to be the Technology Day, which we celebrate the day India has celebrated our nuclear power to the world. I'm happy to share with all of you that while we kept you waiting in this event, yet another exciting event was happening in Vigyan Bhavan, where a book was released, Modi at 20. While we all look at Modi ji as energetic as a 20-year young boy, the book was actually the 20 years of governance of Modi ji as Chief Minister of Gujarat and also currently as the Prime Minister. From dreams to delivery. This book has entire story of how Modi ji has transformed the Gujarat and also the country we are progressing. I strongly advise all the friends in the audience that as early as possible, the book stock is over, go ahead and pick up a book so that you really enjoy what Modi at 20 is. I also take this opportunity to make sure that DST and TDB are committed to see that whenever there's a young entrepreneur, a new idea is there, we are there to hold your hand in such a way that India has more and more unicorn companies. I also sincerely thank Honorable Minister today for releasing two important documents. One, the launch of scientific social responsibility. We always seen that corporate social responsibility is something we talk of. But all the scientists also have a corporate social responsibility, and I do urge the scientific fraternity that how we can really connect ourselves to see the technologies we make or the science we practice really reach the last man. Another is not in the tier 1 cities but also in tier 2, tier 3, and also any common man who has an idea and he wants to use the equipment for a purpose that has to be available. To the global welfare. As we all know how India has stood up to the challenge of COVID, and we were able to vaccinate more than 1.5 billion people. World thought that we will take 10 years and 15 years before we vaccinate our country. But we have done much faster than the developed nations and shown to the world India is no less, and India is already part of the developed nation league. The DST and TDB are committed to providing an ecosystem which encourages Indian scientists, researchers, innovators to embark on the unique journey that promotes science and technology, innovation and advancement for betterment of all of us. Seated on the dais with me, Secretary Science and Technology, Dr. Chandrasekhar, Secretary Biotechnology, Dr. Rajesh Gokhale,
Mr. Rajesh Pathak, Mr. Akhilesh, members of the fraternity, ladies and gentlemen. To begin with, I have to perform the pleasant task of congratulating the award winners before I say anything more. And this program this afternoon gives me a personal delight for more than one reason, in fact for 2 or 3 reasons. A, that we are observing this program to commemorate the memory of Dr. APJ Kalam and the Pokhran, which is closely associated with him. So incidentally, we have had opportunity to be associated with Dr. Kalam as a scientist, as a researcher, and there was much to learn from him. And since me and many others like me have adopted the principle of trying to learn at least one new thing from him, incidentally, up to the last day that he lived, we were learning from him. In fact, on that fateful day when he was to deliver his lecture, while actually he passed away doing so, we had also, in a way, partnered that program at IIM Shillong, where we have now set up a chair in his name called APJ Kalam Chair. And he landed at Guwahati. It was too late to take the chopper, but as a person of commitment as he was, he decided to go by road. And then I think it was great blessing that he passed away doing what he loved the best. He was standing on the podium like me and suddenly collapsed. The moment I received a call there, I thought I was the first one. So they were then moving him to the hospital, and the doctor there said that he is possibly no more. But I think for all of us who are into the business of research and startups, one important thing which I noticed, because after he left Rashtrapati Bhavan, he got into medical research. So that's how he got closely associated. He was actually working on oncogens. Just a few days before he passed away, we were at the Pragati Maidan. He loved addressing students. So this was a program of 10 plus 12 students. And suddenly he asked me, Doc, why some of these boys are looking taller than the others? That was a childlike curiosity, because he was seeing them there. So then I also carefully tried to spot out, and then I told him, no, sir, it's not that. Actually, this is a stepwise arrangement. So the boys who appear taller are actually standing at a step higher than the earlier ones. Well, this was something very innocuous. Hardly is noticed. Even if you notice, you don't bother about it. Hamara kya lena dena lamba hai ke niche hai. But that was his scientific itch, which is called itch. He wanted to actually find answer to that. So I think that is something that is a carry-home message for each one of us who is into this business of innovation, technology, and I'm glad that we are associating this day. The second reason why I feel personally delighted, I said we would time this ceremonial launch with this National Technology Day, is this booklet which you've seen just now being released called Scientific Social Responsibilities. So it was my request, and I'm glad that it was timed with this day. And fortunately we have in Prime Minister Modi a person who is a very great resource person also. Each time you are there, he will give you some new cue. And incidentally, the idea for the first time came from none less than him. Honorable Prime Minister was addressing the Indian Science Congress in 2017, and then he dropped the idea. Could we have something like this? Like, since I'm also dealing with DOPD, he was addressing the Independence Day in 2014, and suddenly he said, can we do away with the interviews so that we do with it? So he just comes out with an idea, but if you work on it, it's a great transformation. So I think for many of us, it holds
importance also because it is an opportunity for us to give back to the society what we got from the society. And when we give back, you have a beautiful English phrase, you give back either in coin or in kind. आप किसी से पैसा ले लेते हैं तो बाद में पैसे नहीं देने को रहते तो अपनी घड़ी वापस करते हैं, लौटाते हैं या गहने दे देते हैं. Here we have an opportunity to pay back in coin. Coin through the knowledge and the infrastructure that we have as members of the scientific fraternity. For certain corporate houses to allocate an earmark of certain amount of their earnings and their profits for the welfare of the society. Here, I think following the same cue, we are adopting this in the sharing of knowledge and sharing of our infrastructure. And I hope, because some of us have already been doing it. In fact, before I came to the government, if not less, I might have conducted not less than for about 5,000 or more free health camps across the country, beginning from Leh, Ladakh up to Mysore and covering almost all the states of the country. And that's because we were a part of the group which was engaged in this. But if it becomes a kind of a social responsibility obligatory to each one of us, I think it would lead to a huge transformation. Now, how we translate it on the ground is something that we can work out. Our scientists can go and deliver lectures for public awareness in the degree institutions. And since we also have in abundance our research equipments, some of which are not adequately utilized. We utilize them for the projects that we have in hand. Sometimes they remain unutilized for a part of time, and then sometimes they also, lose out their validity because the next generation equipment comes in, as it often happens in the scientific pursuit. And meanwhile, the Department of Science has also formulated a draft, which Dr. Chandrasekhar was sharing with me, called SIRIMAN, the acronym standing for Scientific Research Infrastructure Sharing, Maintenance and Network Guidelines through stakeholder consultation. So I think we made a beginning by this launch of SSR guidelines, and we would carry it forward in the best possible way that we can do. I think once we start off, it should not appear to be only mandatory, it should come as a natural urge also. I am saying so because about 20 years back or 15 years back, we tried this experiment with the medical fraternity. We tried to suggest to the teachers in medical fraternity to at least spend 1 hour every month, if not every month, at least once in a quarter, going out for a public awareness lecture or going out for a lecture of that sort in a higher education institution. It happened for a while, but I think later on they didn't enjoy it. They gave up. And we didn't. So I think we should stick to the spirit of social responsibility rather than economically driven social responsibility. This sometimes happens because being part of this, I am quite familiar with the virtues and vices of what we go through. So that's why I am trying to spell this out. And the second part, as far as the technology awards is concerned, I think the highlight this afternoon I was noticing is that among the awards given today, 7 were the startups and the others were the women entrepreneurs. Every facility scientist. Yeah. COVID, led to disconnect. Pressure die casting pistol, sir. First time in India. Otherwise, pistols are made in gravity die casting, and this is special type of coating. This is aluminum alloy. Yes, dry silicon alloy. What is your product? मेरा प्रोडक्ट तो यही है जो आप खड़े हो सर, इसको कैप्चर कर लें। थोड़ा आ गया सर, एक बार रुक तो चला।
जिन्होंने मीटिंग रिट्रीट पे इतना कमाल किया था और आपके सपोर्ट से। आपका वॉइस भी रिकॉर्ड ये एक्सरे वो रेडिएशन का था जो रेडिएशन से आगे है। ट्रायल हुआ इसका? Yes, sir. Who's done? Sir, we have done the run on the different Indian populations in terms of geography. No, through some hospital-based trial कोई Yeah, नहीं है. yes, sir. We just want to So this will require tremendous amount of scrutiny before we actually market this. You should get in touch with some good institute that you have in particularly clinics like AIM has one. वहाँ पे वो मैडम होती थी साउथ वाली चीज़ रिटायर्ड तब इसको करेंगे ना हम हैं हम नहीं करेंगे वो मैडम थी वहाँ जाके वो ट्रायल जब तक इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं होगी मार्केट इन हेस्ट देन बैकफायर्स तो दिस इज वेरी और इसका कई बार कंज्यूमर कोर्ट में भी केस बन जाता है इसका कराएंगे इसका बेटे कराएंगे उनके साथ रहो आप एक अच्छा स्टैंडर्ड ट्रायल करने इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये वही वाला जो चिप्स बना रहे हैं नेविगेशन अपना गुड हाँ वो दिखाया उसे सांस तो नहीं बंद होता नहीं सर नमस्कार। आपने कल उसमें लगाया था सर ये फील्ड दैट यू नो वेरी वेल सो वी आर टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम का है जो अक्सर बना रही है। ओके रहिए चलिए वो हो गया तो ये इसका इनको अभी मिल ये तो अभी गुड इट्स अ गुड गन इट्स अ हैंडी पोर्टेबल पहले वाली कितनी बड़ी थी I think patients who are ambulatory sometimes it may not be you need to shift them. This can be like a portable ECG machine came as a breakthrough. Portable radiation. You have been can be used as a portable. It has a potential. So that should be. That sometimes looks like. मांगूस रहे थे वहीं पे पहले वो आप फ्रेम पे आ रहा था आगे आगे मैंने बोला यहाँ मुझसे दिक्कत ये डे लाइट हार्वेस्टिंग का हाँ, यहाँ पे दिख रहा है साथ हाँ ये गेम्स का लेना है हम लोग ड्रिंकिंग वाटर पे काम करते हैं फॉर विलेजेस स्मार्ट सिटीज एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन This is our corporate, we are putting machines in offices, airports. वो बताया Or thanks to your advisor, we are also doing now IoT monitoring of the lake and Jhelum water quality monitoring. वो एक बार हम कर लेंगे then we will also try that in the lake in Manipur. Okay, sir. ये तभी शुरू होने वाला है. मणिपुर में वो लेक Last week we were there. है not forgetting the name. The more they send money from this central government for the cleaning of these two lakes, the Dal Lake in this and the Talkot Lake, I think in Manipur, उतना ज़्यादा गंदा होता है. तो मैंने उसको कहा मैं ऐसा नहीं भारत सरकार जो पैसा आता है वो इसमें चला जाता है इसकी और गंदगी हो रही है. And now finally that lake in Manipur is facing CBI inquiry for embezzlement of funds. No, sir, this is online now with the IoT sitting here. You can. नहीं ये तो
टेक्नोलॉजी अलग है। नहीं, मैं इसकी नहीं बात कर रहा, इससे पहले क्या होता स्पेशल ग्रांट्स हम भेजते थे, जो 2 लेक्स बड़ी इनफेमस है और दोनों गंदी होती हैं, पैसा भी जाता है। किल वहीं पे हो जाता है। I'm flying in the morning. प्लीज फ्रेम में आ रहे हो Thank you.